the chapters are there in your syllabus, right? Right, Ali? Yes, ma'am. Okay, so let me give you. If pth qth of gp are a b c respectively, then prove that a to the power q minus r times b to the power r minus b times c to the power p minus q is 1. Okay, this is based question. And yeah, do it, check it. Are you able to prove that left hand side over here is equals to right hand side? Please check it. GP, okay, geometric progression.
Can we do the first question? Yeah, sure. Okay. तो यहाँ पे लिखा हुआ है that pth, qth and rth term of a GP are this. Just a second. Yeah. Okay. तो चलो लिख लेते हैं कि pth term, qth term for GP, nth term's formula is, what is the formula for nth term of a GP? A r to the power n minus 1. Yes or no? Right? Ali? Okay, then we are talking about pth term. Yes, ma'am. तो pth term क्या होगा? अगर हमने फर्स्ट टर्म को चलो अज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ टर्म ए बी सी है, तो लेट्स कॉल द फर्स्ट टर्म एज अ कैपिटल ए and the common, I mean common ratio, not difference, common ratio is capital R. Okay, so this is the formula we are having if pth term we are writing, and so a is equals to pth term will be a r to the power p minus 1. Yes or no? Yes, ma'am. B is equals to a r to the power, we are talking about the same GP. Okay, the first term will remain same, common ratio will remain same, a r to the power q minus 1, and C will be capital A r to the power, we are talking about rth term, so small r minus 1. Okay, now this three conditions, these three equations we are having in hand. Now we have to show that this is equals to that. So what if we will be substituting at the place of A, whatever we are having A, at the place of B, whatever we are having for B, and at the place of C, whatever we are having for C. Let's try doing it. So यहाँ जो A है ना proof वाले LHS में, we'll be taking at the place of that, we'll be taking A r to the power P minus 1, like this, at the place of A. And the whatever exponent is given, I am going to copy paste as it is. Then at the place of to the power q minus 1, like this. And then this r minus b will copy paste as it is. And then at the place of c, I am going to take this a r to the power r small r minus 1. And then the other exponent I am copy pasting as it is. Is it making sense, Ali? Yes, ma'am. Okay, let's continue. Now we will be multiplying the exponent. See, whenever the law of exponent says that when you are having ab to the power n, it means a to the power n, b n, it will be a to the power 2n and b to the power n, right? So a to the power q minus r into r to the power, दो एक्सपोनेंट्स है, जब भी किसी सेम बेस के दो डिफरेंट या सेम एक्सपोनेंट होते हैं तो हम उन दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? राइट, Yes, ma'am. multiplied with a to the power r minus b. Okay, then r to the power this two different exponents, that is q minus 1 r minus b, then a to the power p minus q, then this capital R to the power r minus 1 p minus q. We have just substituted whatever was given and we have expanded it by using the law of exponent, and it still will be using law of exponent. Okay, because we don't know how to create one out of it. So we can see a over here, we can see a over here, we can see a over here. Law of exponent says that when something into something, when the bases are same and all are in multiplication, then we are supposed to add the powers. Yes or no? Yes, ma'am. A to the power m into a to the power n is a to the power m plus n. So let's r minus p added with p minus q. Okay, and similarly r to the power this, r to the power that, r to the power that will be just doing the addition of all the exponent.
पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मल्टीप्लाई कर ले फिर एडिशन करें, या फिर ऐसे ही एज इट इज एडिशन कर दे, इट्स अ सेम थिंग. ओके, so I am going to add it like this only. Added with q minus 1 r minus p. Added with wait. Okay, let me share the screen again, Ali. Automatically it got stopped. So far, is it clear, Ali? ma'am. Okay, just we are doing the simplification, and maybe, okay, maybe while doing this just simplification only, we'll be able to find whatever we are supposed to find. So yeah, let's continue. So r to the power, I was writing multiplied with q minus r, added with q minus 1, multiplied with r minus p, added with r minus 1, multiplied with p minus q. Okay, let's continue. This q gone, this r gone, this p gone, a to the power 0 is nothing but just 1, right? But what about this r? So r part still we need to simplify and distributive property, because we can see nothing is common from all the term. So pq minus pr minus q plus r, getting it, Ali? Yes, ma'am. Getting it? Okay, let's do the multiplication. Let's continue it. So we'll be having rq minus pq minus r plus p, then plus rp minus qr minus p plus q. Now let's cancel whatever is getting cancelled. PQ gone. Okay, PR and this RP over here will cancel out each other. Then QR over here, RQ over here will cancel out each other. Then minus Q over here plus Q over here will cancel out each other. Then minus R plus R will cancel out each other. Okay, and we will end up having r to the power 0 as well, which is nothing but 1. Got it, Ali? Yes, ma'am. We have just done the simplification. ये जो sequence and series chapter है, यहाँ most of the question में just हमें formula लिखना होता है और थोड़ा simplification करना होता है. Maybe huge simplification करना होता है, but okay, you will be getting whatever we are supposed to get. Now please try the next question. The sum of the first three term of the GP is this, and their product is this. Find the common ratio and the term.
Getting it, Ali? Can we discuss it? Can we discuss it, Ali? Or you are doing it? Yes, ma'am. You can discuss it. Okay, so whenever we are having such question where it says that sum of first three term, product of first three term, or maybe sum of first five term, product of five term, or maybe sum of first four term and product of four term. तो या तो थ्री टर्म की बात हो या फोर टर्म की बात हो या फाइव टर्म की बात हो या सिक्स टर्म की बात हो, अगर ऐसे प्रोडक्ट और सम दिया हुआ हो तो हमारा जनरल फॉर्म ऑफ जीपी कैसा दिखता है? General form of the GP looks like the first term is A, next term is A multiplied with this R, next is AR square, next is AR cube, next is AR to the power 4, next is AR to the power 5. So this is the generalized form of the GP, right? Right? Yes, Right, ma'am. Ali? But in such question, if you will start the assumption that suppose our first term is A, next is AR, next is AR square, then we will end up getting like so many calculation and the whole scenario simplification will be huge. Okay. So for such question where the sum and the product is given for first to three term, four term, five term, six term, we need to we need to assume a special GP. नाउ व्हाट डज दैट मीन? जीपी मीन्स व्हाट? जीपी एक ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं जहां पे ये जो रेशियो है, ओके, रेशियो बिटवीन द सेकेंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म टू द सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म टू द थर्ड टर्म, ये सारे ही रेशियो कॉमन होने चाहिए। ऐसे सीक्वेंस को हम जीपी बोलते हैं, राइट? राइट अली? Yes, ma'am. अब ये जो रेशियो है, कॉमन रेशियो, हमें पता है ये जो कॉमन रेशियो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, राइट? राइट। Yes, ma'am. तो देन रादर देन अज्यूमिंग दिस जनरल फॉर्म, ओके, वी विल बी टेकिंग, सपोज अगर हमें ए के पहले वाले टर्म के बारे में सोचना पड़े, तो क्या होगा? पहला वाला टर्म ए आर ए स्क्वायर था, इसके पहले वाला टर्म क्या है? ए आर है। तो क्या हमें समझ में आ रहा है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है दैट पहले वाला प्रीवियस टर्म निकालने के लिए हम आर से डिवाइड कर रहे हैं? यस और नो? Yes, राइट? ma'am. ध्यान से देखो, ए आर टू दावर 5 है, इसके पहले पिछले प्रीवियस टर्म क्या है? ए आर टू दावर 4। तो आर से डिवाइड होके आया होगा, तो ए के पहले वाला टर्म कैसा दिखेगा? ए बाई आर। अब हम इन तीनों टर्म को अज्यूम करेंगे द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ आवर जीपी। we will be assuming that our first term is AR. ये हमारे first three terms of the GPU. Okay, the way I said, the ratio need to be same, whatever is the ratio. And इस केस में तो ratio हमारा still common ratio हमारा R ही है, right? Right? Yes, ma'am. तो first three term हमें इन तीनों को लेना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम प्रोडक्ट लिखेंगे इन तीनों का, क्या तुम्हें दिख रहा है अली दैट आर एंड आर विल कैंसल आउट ईच अदर? और अगर प्रोडक्ट का वैल्यू हमें दिया है तो यहाँ से इजीली हम ए का वैल्यू निकाल पा रहे हैं, राइट? Yes, ma'am. Okay, so whenever such scenario is given that the sum of first three terms is this and their product is this, we will be assuming the first three as a special GP like this. अगर फर्स्ट फाइव टर्म की बात हो रही होती तो हम क्या लेते? फर्स्ट फाइव टर्म अगर हमें लेना होता तो हम इसके एक और पहले वाला टर्म लेते, मतलब ए बाई आर स्क्वायर।
एंड ये जो ए आर तक हमने लिया है इसके एक बाद वाला, अगर क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि दैट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ अ जीपी सम इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस, सम एंड प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है. ओके, ए बाई आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म इज ए बाई आर, नेक्स्ट टर्म इज ए, नेक्स्ट इज ए आर, एंड नेक्स्ट इज ए आर स्क्वायर. 5 टर्म्स हम अज्यूम कर सकते हैं, ओके, फॉर अ जीपी. इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, तो क्या अभी भी तुम देख पा रहे हो वाली, दैट जैसे ही प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑल द आर विल कैंसल आउट ईच अदर. यस और नो? Yes, ma'am. गेटिंग इट? तो ये जो ऑड नंबर वाले टर्म है, ओके, सम ऑफ 3 टर्म, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म, हमें कैसे स्पेशल जीपी लेना है, दिस इज द वे. 5 term, product of 5 term, how we'll be taking the special gp, like this. 7 term, 7 term की अगर बात हो क्वेश्चन में, ओके, एंड प्रोडक्ट एंड सम अगर दिया हुआ हो, तो जो हमने 5 में लिया है उसके और एक पहले इस लेफ्ट साइड से लेंगे एंड राइट साइड से एक बाद वाला लेंगे, तो ऐसे 7 टर्म्स हम अज्यूम कर पाएंगे. ओके, बट अगर क्वेश्चन में बोले देयर आर 4 टर्म्स इन अ जीपी, ओके, द फर्स्ट 4 टर्म सम इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस, तब कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को. ओके, ये तो ऑड नंबर की बात हो गई कि जब ऑड नंबर दिया हुआ 3 टर्म्स का सम इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस, तो हम एपी, हम आई मीन जीपी हमारा ऐसे अज्यूम करेंगे, ए आर 5 टर्म लाइक दिस, 7 टर्म लाइक दिस. अगर 4 टर्म की बात हो तो थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा. Our general format of the GP is first term is A, next is AR, next is AR square, next is AR cube, next is AR to the power 4, next is AR to the power 5, like this it will continue. ओके, अगर हमें 4 टर्म्स लेने हो तो हम कैसे ले, मैं कुछ और प्रीवियस टर्म्स भी मैं लिख दे रही हूँ यहीं पे, दैट द प्रीवियस वन विल बी ए बाई आर, previous to this will be a by r square, previous to this will be a by r cube, previous to this will be a by r to the power 4. okay, अगर हमें 4 टर्म लेना हो, then if we will take this, let me check first. Okay, then this, then this, no. ऑल्टरनेट टर्म्स अगर हमने ले लिया, क्योंकि हमें पता है जीपी का मतलब ये होता है कि रेशियो सेम होने चाहिए. अब वो रेशियो 1/2 है, या फिर जस्ट 2 है, या फिर 4 है, या फिर -3/4 है, कुछ भी रेशियो आ रहा है, बस सारे रेशियो सेम होने चाहिए. तो अगर हमें 4 टर्म्स लेना हो, एक ऐसा जीपी है जिसके फर्स्ट 4 टर्म्स का सम इज गिवन एंड फर्स्ट 4 टर्म्स प्रोडक्ट इज गिवन, तो हम ऐसे जीपी को अज्यूम करेंगे दैट आवर फर्स्ट 4 टर्म्स आर ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर एंड ए आर क्यूब. नाउ द क्वेश्चन इज इट इन जीपी? तो चलो चेक कर लेते हैं क्या ये जीपी में है. कैसे चेक करते हैं, कॉमन रेशियो. ओके, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, राइट अली? दैट मीन्स a by r multiplied with r cube by a gone, and we are getting r square from here. अगर हमने इन दोनों को भी लेके चेक किया तो ध्यान से देखो वाली, ए आर डिवाइडेड बाई ए बाई आर, और यहाँ से हमें मिलेगा ए आर multiplied with r by a gone, and we are getting r square. Next two also you will be checking and you will be getting the ratio as a r square. Can you see the ratios are common? हाँ या ना? जीपी अज्यूम करते टाइम बस हमें यही तो ध्यान में रखना होता है कि ये जो रेशियो है ये कॉमन होना चाहिए. अब यार सारे ही रेशियो या तो m है, या m स्क्वायर है, या r है, या r स्क्वायर है, डजेंट मैटर.
Yes or no? Yes, ma'am. ओके, सो अगर हमें 4 टर्म अज्यूम करना हो, ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने अभी जा रहे हैं, इस ऐसे क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर लिखा हो फर्स्ट 4 टर्म, हम ऐसे ऐसा कुछ जीपी अज्यूम करेंगे। थोड़ा माइंड में तुम रख सकते हो कि 4 टर्म वाले में हम ऑल्टरनेट वाला टर्म्स अज्यूम करते हैं। ओके, आर क्यूब से स्टार्ट करके, तो यू कैन चेक इट। अगर इन चारों को हम मल्टीप्लाई करने बैठे, देन ऑल द आर विल कैंसल आउट ईच अदर। कैन यू सी दैट? क्यों हम इसी जीपी को अज्यूम करें? क्योंकि यहाँ से हमारा सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके, अगर हमें इवन नंबर 6 टर्म्स की बात हो या 8 टर्म्स की बात हो, तो जैसे मैंने पहले वाले में केस में सिखाया है कि इसके एक प्रीवियस वाला टर्म एंड इसके एक बाद वाला टर्म। और क्योंकि हम इस टाइम क्या ले रहे हैं, ऑल्टरनेट टर्म्स, तो इस बार आर क्यूब के बाद हम आर टू द पावर 5 यहाँ से पिक करेंगे, और यहाँ से भी ए बाई आर टू द पावर 5 पिक करेंगे। आ रहा है समझ में अली? Yes, ma'am. अगर हमें 6 टर्म्स लेना पड़े तो। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग राइट नाउ। तो हमें क्या अज्यूम करना है? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी। हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ पे हमें स्पेशल जीपी ही लेके प्रोसीड करना पड़ेगा। और हमारा स्पेशल जीपी क्या है? हमारा स्पेशल जीपी है ए बाई आर, ए ए आर। ओके, द सम ऑफ दिस थ्री is given as a 13 by 12, and the product is given as a -1. Product is -1. R gone. प्रोडक्ट वाले केस से हमें क्या मिल रहा है? ए क्यूब इज -1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए विल बी -1, राइट? किसी नंबर का क्यूब करने पे -1 आ रहा है, तो वो नंबर -1 ही होगा। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो हमें ए क्या मिला? कैसे पता चला -1? ऐसे हमने सोचा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम क्यूब करें और हमें रिजल्ट -1 मिल जाए। ओके, तो यहाँ से हमें समझ में आया -1 को ही क्यूब करके -1 आता है। स्क्वायर वाले सिनारियो में हम ऐसे नहीं सोचते हैं। स्क्वायर में अगर नेगेटिव और रूट के अंदर, तो हम बोलते हैं कि दिस इज इमेजिनरी। सो ए वी गॉट। ओके, इक्वेशन 1 में हम ए की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, आर हम फाइंड कर पाएंगे, राइट अली? Yes, ma'am. ओके, सो equation 1 I am writing over here. Let's do the simplification quick. A by r plus AR, that is 13 by 12. Okay, we are having a as a -1, so -1 by r plus, okay, here -1, here minus r, that is 13 by 12. Okay, r we can take out as a LCM, and as r square, that is 13 by 12, like this. We'll be having -1, okay, minus r square. This all multiplied with 12 is equals to 13r. Okay, this 12 we can multiply with each and every term. We'll be getting -12 minus 12r minus 12r square is equals to 13r. And after that, you will write Ali. Yes, ma'am. ओके, हमें ये पता है, आर पता है, देन वी कैन से व्हाट इज कॉमन रेशियो। एंड टर्म्स भी हमें बताना है। टर्म्स का मतलब है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हमने फर्स्ट टर्म अज्यूम किया था ए बाई आर, तो हम ए एंड आर पुट करके बता देंगे व्हाट इज फर्स्ट टर्म। हमने सेकंड टर्म अज्यूम किया है जस्ट ए, तो हम ए की वैल्यू लिख के बता देंगे हमारा सेकंड टर्म क्या है। एंड थर्ड टर्म इज ए आर, we will be putting the value and we can say what is the third term. Now let's do the next question. This complete everything is clear or not? Anywhere any doubt early? No, ma'am. Now the next question is insert 3 numbers between
1 and 256, that so that the resulting sequence is in GP. Please do it. Ma'am, 4 16 64. Just a second, let me check. Yeah, it is 4 16 64. Let me give another question. Just a second, no, let me say it again. Yeah, no.
Ma'am, can you do it together? Yeah, sure. Let's do it. So whenever it's talking about AM and GM, that means arithmetic mean and geometric mean. Okay. अगर हमारे पास दो नंबर्स है, बेसिकली अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो नंबर्स है ए एंड बी, इनके इनके बीच में ऐसा कौन सा नंबर हम इंट्रोड्यूस करा दें कि जो हमें इन तीनों नंबर का सीक्वेंस मिलेगा, दैट विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव। तो वहां से कंसेप्ट आया कि बीच वाला जो नंबर होगा दैट मस्ट बी ए प्लस दिस टू, ए प्लस बी बाई टू। फॉर एग्जाम्पल अगर रैंडमली हमने दो पॉजिटिव नंबर अज्यूम कर लिया, जैसे कि 2 और 6, अब मैं बोल रही हूँ इनके बीच में ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, ओके, सो दैट ये तीनों मिलके एक एपी बना दे। तो फॉर्मूला कहता है कि इन दोनों को ऐड करो एंड 2 से डिवाइड करो। मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2, देन दिस विल बी 4। इन दोनों के बीच में जैसे ही पुट किया, अब ये तीनों मिलके एपी क्रिएट कर रहे हैं, चेक करके देखो हाँ या ना। गेटिंग इट अली? These three are making an AP, right? Yes or no? 2, 4, 6 is in AP or not? Differences are same. You can see 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2. Yes or no? It is in AP, right? Yes, ma'am. तो ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो हमें मिडिल वाला नंबर बता देगा ताकि एपी मेंटेन हो जाए। और एक ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास सेम ए एंड बी है, तो इनके बीच में ऐसा क्या हम इंट्रोड्यूस करा दें so that these all three will make a GP। तो उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है दैट अंडर रूट एपी विल बी टेकन। तो अगर हमने फिर से सेम एग्जांपल लिया कि मैंने दो पॉजिटिव नंबर चूज किया 2 और 6, और अब हम सोच रहे इसके बीच में ऐसा कौन सा नंबर हम पुट कर दें कि ये तीनों नंबर मिलके एक जीपी बना दे। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बोलता है दोनों एंड वाले नंबर को रूट के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6 into 2। ओके, दैट मीन्स 12। ओके, दैट मीन्स रूट 12। रूट 12 का क्या मतलब होता है? 4 3 टाइम्स 12, दैट मीन्स 2 रूट 3। या फिर 2 रूट 3 भी लिख सकते हैं हम रूट 12 को। चलो देख लेते हैं क्या ये एक जीपी क्रिएट कर रहा है या नहीं। जीपी का मतलब होता है द रेशियो बिटवीन सेकेंड टर्म टू फर्स्ट टर्म, 2 रूट 3 बाई 2, द रेशियो इज रूट 3। दिस हैज टू बी सेम विद द रेशियो बिटवीन द थर्ड टर्म टू सेकेंड टर्म। हमने रैशनलाइज किया या फिर 3 को रूट 3 into रूट 3 सोच के कैंसिल किया, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है अली हमें यहाँ भी रूट 3 मिलेगा, हाँ Yes, या ना? ma'am. तो जी ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बाई टू। ओके, द सम ऑफ दोस टू नंबर डिवाइडेड बाई 2। और ऐसे हमें एक ऐसा मिडल वाला नंबर मिल जाता है जो एक एपी क्रिएट करने में हेल्प करता है या एक जीपी क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट इफ ए एंड जी आर ए एम एंड जी एम, दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। कौन से दो पॉजिटिव नंबर हमें नहीं पता है, देन लेट्स अज्यूम दिस टू पॉजिटिव नंबर आर ओके एक्स वाई, ओके, और मे बी ए बी। Okay, so let's take, we are having two positive number, one is x, another is y। अब इनका अरिथमेटिक मीन जिसे हम कैपिटल ए से सो दैट x प्लस वाई बाई टू, यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, second I'm sharing again, automatically it is getting paused, I don't know why।
Yeah. So we have assumed two positive number. One is x, another is y. अरिथमेटिक मीन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें और नो या यू कैन Yes, ma'am. राइट ओके सो कैपिटल ए को हम कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बाई टू एंड वाई राइट अली अब हमें यहाँ से क्या करना है इक्वेशन नंबर वन को अगर हमने थोड़ा कस्टमाइज किया तो क्या हम लिख सकते हैं दैट एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट टू है एंड इक्वेशन टू को थोड़ा हमने कस्टमाइज किया तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज नथिंग बट जी स्क्वायर राइट अली Yes, ma'am. अब हमारे पास ध्यान से देखो दो इक्वेशन है एक इक्वेशन कहता है एक्स प्लस अब हमारे पास क्या है दो इक्वेशन है एक इक्वेशन कहता है दैट एक्स प्लस वाई इज टू ए और दूसरा इक्वेशन कहता है दैट एक्स वाई इज जी स्क्वायर हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में लिखा है देन द टू टर्म्स आर और दोनों जो टर्म है वो ए एंड जी के फॉर्म में है मतलब हमें यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है जिसमें ए दिखेगा जी दिखेगा यस और नो राइट अली Yes, ma'am. चलो ट्राई करते हैं कि क्या हमारा एक्स एंड वाई का वैल्यू ऐसा ही आता है जैसा क्वेश्चन में बोला गया है ओके तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर हम यूज करने की कोशिश करते हैं देन एक्स इज नथिंग बट जी स्क्वायर बाई वाई अगर इस एक्स को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो जी स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई बट ओके वी नीड टू डू इट या फिर इन दोनों को यूज करके हम x माइनस वाई का फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं ओके आइडेंटिटी यूज करके तो एनीवे ओके लेट्स कंटिन्यू जस्ट अ सेकंड I'll be showing you another way as well okay let's do this way the basic way the method of substitution so we are going to take put this g square by y in equation number 1 x के प्लेस पे जैसे ही हमने g square by y पुट किया added with y is equals to 2a from here we'll be getting square is equals to 2a y right Ali oh my god again and again it is getting so let me try sharing whiteboard maybe that will not get closed by itself can you see the whiteboard Ali yes or no Yes, ma'am. okay let's continue so x plus y we are having as a 2a and being xy as a yeah yes Ali try solving it no whatever I am saying just follow the instruction I am rejoining in a minute okay ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज 2a राइट लिखो पेपर पे एंड एक्स वाई हमारा क्या है इट वाज जी स्क्वायर राइट राइट अली Yes, ma'am. अब यहाँ से चलो जो जो हम प्रोसेस यूज कर रहे थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वहां से बहुत लेंथी और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है वी विल बी चेकिंग दैट बट यू शुड चेक दैट हम अगर आइडेंटिटी यूज कर ले दैट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई लिखो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर
Written Yes, ma'am. x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस वाई वाले से हमें क्या मिलेगा, प्लस टू ए बी, बट हमें चाहिए माइनस टू ए बी, सो माइनस फोर एक्स वाई. गेटिंग इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? Yes, ma'am. ओके, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई. इस आइडेंटिटी में जो हमारे पास x प्लस वाई है वो यहाँ पुट कर देंगे, और जो एक्स वाई है वो यहाँ पुट कर देंगे. तो हमें एक x माइनस वाई वाला इक्वेशन मिलेगा. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. हो सकता है स्क्वायर है लेफ्ट साइड में, तो स्क्वायर को अगर हम शिफ्ट करें तो रूट में आ जाए हमारा इक्वेशन, दैट x माइनस वाई इज रूट ऑफ दिस वन. कंप्लीटली ओके. ओके, तो x माइनस वाई वाला हमने इक्वेशन क्रिएट किया. अब हम इस इक्वेशन को x प्लस वाई वाले इक्वेशन के साथ मेथड ऑफ एलिमिनेशन से या तो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जस्ट क्विकली x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे, हाँ या ना? Yes, ma'am. ट्राई करो एंड देखो कि जो क्वेश्चन में x और y बोला गया है क्या हम वही x और y निकाल पा रहे हैं. ओके, आई एम रीजॉइनिंग इट. ओके, I'm rejoining over here. Or at first I'm trying like this. You keep on doing it. Yeah. Can you see, Ali, we are getting whatever is given over there? Yes, Yes ma'am. or no? X का वैल्यू हमें दिख रहा है. अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y बच जाएगा. 2y is equals to subtraction we are doing. So 2a minus 2 under root a square minus j square. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है हमें कहाँ से ये मिला a square minus j square अभी? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. So we are getting the answer, right? Got it, Ali? ये easiest method है.
प्रीवियस मेथड से भी हमें मिल जाता, हो सकता है लेंदी हो जाते हैं हमारे स्टेप्स, बट यहाँ से भी हमें आंसर मिल रहा है. गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, so this is the concept of AM and GM. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे एक्सरसाइज में जो जिसमें AM एंड GM इन्वॉल्व है. बस हमें यही ध्यान में रखना है AM का मतलब क्या होता है, GM का मतलब क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज evaluate summation of k is equals to 1 to 11 2 plus 3 to the power k. Please do it. Are you getting it, Ali, how to solve it? Are you doing it? See, we can take this case line from 1 to 11. इसका मतलब है कि we'll be adding this all. That 2 plus 3 to the power 1 को हमें किससे ऐड करना पड़ेगा? 2 plus 3 to the power 2 से. इससे ऐड करना पड़ेगा 2 plus 3 to the power 3 से.
इसे ऐड करना पड़ेगा 2 प्लस 3 to the power 4 से। इसे ऐड करना पड़ेगा 2 प्लस 3 to the power 5 से। ओके, ऐसे कंटिन्यू होगा हमारा पैटर्न टिल 2 प्लस 3 to the power 11 तक, क्योंकि समीशन का तो यही मतलब होता है। राइट अली? राइट। यस मैम। ऐसे हमें 2 कितने बार मिला? ध्यान से देखो, 2 2 2 2 2 2, तो क्या हम बोल सकते हैं हमें 11, ये जो 2 2 2 2 2 2 कितनी बार मिलेगा? 11 टाइम्स, दैट मीन्स 11 इंटू 2 हम बता सकते हैं will give the summation of all the twos, just two. Getting it? Getting it? यस मैम। Okay. So इन सारे 2 को ऐड करके हमें क्या मिला? हमें तो बस एडिशन ही तो निकालना है। तो ये जो सारे 2, अब ये जो सारे 3 है, इन्हें ऐड करके क्या मिल रहा है? तो 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये तो एक जीपी क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे कॉमन रेशियो हमारा 3 है और फर्स्ट टर्म भी 3 है। यस और नो? राइट? राइट अली? यस ये मैम। तो एक जीपी है, और जीपी टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए दिस r to the power n-1 by r-1। राइट अली? तो हमारा यस ए मैम। क्या है? 3। क्या है? स्टिल 3। एन क्या है? 11 टर्म्स को हमें ऐड करना है। ओके, बाय 3 minus 1 2, so we'll be getting 3 to the power 11 minus 1, you can keep it as will be calculating. Okay, you will be able to calculate. So are you understanding the steps अली? और जो हमें यहाँ मिलने वाला है, इससे हमें क्या करना है? 22 ऐड करना है। गेटिंग इट? यस मैम। ओके, इधर यू कैन फाइंड 2 to the like 3 to the power 11, और अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम ऐसे भी लीव कर सकते हैं दैट वी आर डन। ओके, दिस इज द रूल वी नीड टू अप्लाई ओवर हियर, दैट्स इट। गॉट इट? यस मैम। लेट्स कंटिन्यू। अगर एक क्वेश्चन, one of the question says that find the value of n such that a to the power n plus 1 plus n will be taken. Okay, after this you just sit with this sequence and series chapter, and you will find that everything you understand over there. दो नंबर्स है हमारे पास a एंड b, और हमें n का वैल्यू फाइंड करना है such that this is the geometric mean between a and b. तो ज्योमेट्रिक मीन का तो फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा, दैट ए एंड बी अगर दो पॉजिटिव नंबर है या फिर जो भी दो नंबर्स है, इनके बीच अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें क्रिएट करना है, ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करना है, दैट विल बी रूट ए बी। राइट अली? राइट? और ये यस जो मैम। रूट ए बी के इक्वल है, जो गिवन ज्योमेट्रिक मीन है, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज ए टू द पावर एन प्लस 1 प्लस बी टू द पावर एन प्लस 1, दैट इज ए टू द पावर एन प्लस 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n. Okay, in question this is the geometric mean. According to us, the geometric mean one can be written as a to the power 1 by 2, b to the power 1 by 2. Yes or no, Ali? यस मैम। अब ये इधर है, चलो इसे दूसरे साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद द अदर साइड, एंड हमें क्या फाइंड करना है? n का वैल्यू।
तो जैसे हम एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन में कैसे दोनों साइड एक्सपोनेंट कंपेयर करते हैं, यहाँ भी हम कुछ वैसा ही करने की कोशिश करेंगे. ओके, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. तो राइट लेफ्ट साइड तो हमारा स्टिल it is a to the power n plus 1 b to the power n plus 1. Okay, what about the other side? So other side will contain this a and b multiplied with the first term will contain a to the power n plus 1 by 2 and b to the power 1 by 2. Right, Ali? Yes, ma'am. So basically, just a second, I'm sharing one more time, the last time. Okay, hopefully we'll be able to finish it. So basically, हम दोनों side, okay, and the exponent, we will try comparing the exponent from both side. Okay, and from there we must be getting the n value. The denominator which we are shifting to another side. So a to the power n plus 1 by 2, b to the power 1 by 2. Similarly, b to the power n plus 1 by 2 and a to the power just 1 by 2. Okay, अब हम adding, but now the confusion is we don't have, okay, we need to do arrangement over here. Okay, Ali. Okay, please do try this one, no? That like while keeping the like comparing a exponent b exponent, but before that we need to do arrangement. Okay, please check. यहाँ at last we'll be getting the answer by comparing the exponent. Okay, a वाले exponent को हम compare करेंगे and b वाले exponent को हम compare करेंगे. थोड़ा एक बार ध्यान देना कि कैसे हम compare कर सकते हैं, अगर कोई simplification possible है या फिर कुछ common factor हम ले सकते हैं तो. Getting it early? Getting it early? Yes, ma'am. Okay, the steps which we are using over here, the concept which we are using, the concept is clear or not? Yes, Ali. Yes, ma'am. Is that clear? Okay. Still, let me check since this file is open.